Hello. Yeah, you can start with your introduction. Good afternoon, ma'am. I am Kumar Aryan. I am from Patna, Bihar. I have done my higher secondary schooling from Himalayan Public School, Patna. I did my graduation in civil engineering from Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad. My BTech final year project is a case study on sustainable assessment of alternative payment material. Apart from academics, I have interest in dramatics as I was an active member of dramatics club in our institute. I am a team player and I find myself very much optimistic in tough situations. That's all about me. Thank you. Okay, done. So, Aaron, when you completed your bachelor's? Ma'am, in 2023. 2023. Yes, ma'am. So, why didn't you go for master's? Ma'am, actually, I wanted to try I wanted to join in the industry. Like, I wanted to try exposure. I wanted to use my technical knowledge in industry. So that's why I went join. Okay. So, like you wanted to explore in this line, like a Yes, public ma'am. sector line, right? So, what is the reason of getting into public sector? Like, why you want to join only public sector and not the private sector? Ma'am, in public sector, there are uh, like uh, many sectors in which public organizations have a very much big role in shaping the people's life directly or indirectly. If we see, there are many major projects that are only handled by the public sectors. So by joining public sector, I will be having the opportunity to serve the nation, which which also aligns with the vision of the PSU to help and to make the lives of the individual better. People make the lives of the nation's people better. Okay. So, Aaron, you told me like you want to work for nation as well, right? Like in total, if you're working into public sector. Till Yes. now, what all things you have done, like what of initiatives you have done, like taken, or what things you have done, which is like directly or indirectly contributing to the nation as well. Uh, Ma'am, first of all, ma'am, uh, not for the nation, I think, but as a society, for the society, uh, in my college, we have performed Nukkad Natak in cities, like in chalks, we spread awareness on social issues. So that's, I think, helping uh, people to understand the situation. Like we performed on women's safety, performed on child trafficking. So these are the Nukkad Nataks we performed on, in colleges also. So that also, I think that is the point. Okay, done. So, Aaron, you are a fresher, right? Yes, ma'am. And you don't have a job experience. Yes. So if you'll be entering HPCL as a fresher, what you think that what all advantages you will get as a fresher and what all challenges you will face as a fresher? Okay. Ma'am, I think the energy of a fresher is unmatched with any working professional. That will be a very much big advantage for me. And the disadvantage, I think, is the experience in in working, like experience in handling the projects that I didn't have. So I think that will be a not as a disadvantage, but yeah, surely I will try to cope up with that, and I will surely learn all the things. Okay. And my next question to you is like how you keep yourself updated with the latest trends, like in your domain, like in your civil domain and in public sectors as well. I'm like technical knowledge or some. Uh, Everything, like if you want to enter a public sector, you always keep yourself updated, right? And you are from a civil background, you need to keep yourself updated daily for that because the trends change day by day, the trends change. So what are the like methods you keep yourself updated? What are the modes you use to keep yourself updated? Ma'am, in college, we were like uh, in colleges there were many seminars from international personalities or some international organizations that were about how to update. Like we were in colleges, then Corona and that pandemic happened. So there was a topic like how to manage and
have a site management in pandemic situations. So that was a one topic we attended that seminar. So I think that there are no seminars are going on. So we should, and I am trying to attend a new seminar. So this will improve my technical knowledge, and through this I can update myself. Okay, so like working in clubs in your organization, having education of so many years, and did your civil, like bachelor's in civil. So you have polished yourself. You might have polished yourself a lot. Okay, Aaron. And in terms of soft skills, I'm asking you. So how you think that in terms of soft skills, you have that skills which will give you advantage over other candidates in HPCL? Ma'am, I think that in soft skill, my uniqueness is like I'm very much kind, softness. Then I'm a team player that I will be working as a very good member for a team. So these are the 2 points that I think that have a unique in me. Okay. You describe like in your eyes, what is the definition of a team player? Yes, ma'am. Ma'am, in my views, the team player is that listens to everyone, that have a open view about everything. Like if any team member is criticizing my view, then also I am very much open to it. And if he is supporting my, then also, and then taking a team forward, like in any situation, be it a tough situations or not, I will be very much keen to take my uh, team or lead my team in a tough situations. These qualities I find as good in a team member or team leader. Okay, so you described yourself as a team player to me. Yes, now I team player. But I to generally asked you like what is the definition of a team player in your eyes. I didn't ask you like how you as a team player will act when you will be working in an organization. In my views, that are the qualities a team player should have. That was your view about a team player, but you just described the answer like if I'll be there, I would be like and all that stuff, right? So ये पता है क्या क्यों चेक करते हैं आपकी एक्टिवनेस के लिए? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ऐसे आंसर देते हो आई का रेफरेंस लेके, आई का रेफरेंस लेके जब हम कोई आंसर देते हैं ना तो हमें बहुत सोच समझ के देना पड़ता है अगर सामने वाले बंदे ने उस रेफरेंस में आंसर पूछा है। मैंने तो आपसे एक जर्नल पूछा था ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टीम प्लेयर इन योर आइज, लाइक व्हाट यू थिंक अ टीम प्लेयर शुड हैव। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ लूं हाउ यू थिंक दैट यू विल एडजस्ट एज अ टीम प्लेयर इन एचपीसीएल, तो आप क्या आंसर दोगे फिर? अब तो आई की रेफरेंस में ऑलरेडी एक आंसर दे चुके हो मुझे। ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू चेक योर एक्टिवनेस। आंसर आपने चाहे पूरा परफेक्ट दिया है मुझे, लेकिन व्हेन यू यूज्ड अ रेफरेंस आई, दैट मीन्स आपने उसको इस जगह पे रखा कि अगर मैं टीम प्लेयर होऊंगा तो मैं क्या करूँ। ठीक है, बट माई क्वेश्चन वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट। डन। Okay, so Aaron, my next question is whenever you enter in an organization, there are two types of growth that drives you. One is the financial growth and the other one is your career growth. Which one is a priority for you and why? Ma'am, I think the career growth is my priority Why? because yes, ma'am, because money can be money can be earned from many ways, not only just in PSU. I can earn while sitting home also, and various ways are there. But my future growth in as a civil engineer will be very much dependent on the HPCL or any PSU where I am joining. So I think my career uh, growth is the priority. ओके, बट आज के टाइम पे लोगों के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ऊपर होती है बिकॉज यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट मनी, राइट? ये आज के टाइम पे Yes, सबका ma'am. थॉट होता है। तो Yes, अगर ma'am. आपने इनिशियली बात करी कि मुझे करियर ग्रोथ चाहिए, सो अगर आपको करियर ग्रोथ मिलती है तो हाउ यू विल मैनेज योर एक्सपेंसेस, योर लिविंग, कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करोगे? So, ma'am, uh, uh, like I'm joining as a civil engineer. So while prospering my career, there is some basic pay and allowances that I will get, and that will, I think will be is sufficient for me to have a life. For my basic amenities, I think that the basic pay and the salary that I will get will be the sufficient. Done. So Aaron, everyone has a long term goal and objective, right?
You might also have. How you think that this role of HPCL will help you grow with your long-term goals and objectives? Ma'am, for long term, I think I see as a member of the board of directors in HPCL. So that is very much practical and satisfied with while joining HPCL. So that will, I think it's okay. And for short term goals, I need industry exposure. Some I need some work where I can apply my civil engineering knowledge. So I think that aligns with the HPCL role and responsibility. Okay, done. So, Aaron, let me just give you a feedback now. ठीक है, आपका इंटरव्यू 15 अक्टूबर को है, राइट? उसके हिसाब से यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ वेरी गुड। अच्छी नॉलेज है आपको, आपने बहुत अपने स्किल्स पे वर्क किया है, आपने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया है कि अगर हीट ऑफ द मोमेंट पे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे काम कैसे रहना है, राइट? लेकिन बीच बीच में ना मुझे लगता है पता नहीं आपका इंटरव्यू पास आ रहा है उस वजह से आपके चेहरे पे मुझे एक नर्वसनेस दिख रही है। वो ये हो सकता है कि द Okay. इंटरव्यू डे इज अप्रोचिंग, आपको डर लग रहा है। अब हर आंसर देने के बाद पता है आपके दिमाग में चीज चलती है कि मैंने सही दिया है ना, उस दिन पे दूंगा तो सही हो गया नहीं। मैं तो चेहरे से पहचान लूंगी कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्या नहीं चल रहा। मैम, बट बेसिकली ऐसा मैं है समझ, कि हाँ, मैं हाँ, समझती हूँ कि इट्स डन, ऐसा होगा, पक्का होगा। लेकिन अगर मैं फाइनल इंटरव्यू की बात करूँ तो आर्यन, आपको जो नॉलेज है, आपने जैसे अपने आप को पॉलिश किया है, मेक श्योर अपने आप को जो डिस्प्ले करोगे ना वो कॉन्फिडेंस के साथ करना। क्योंकि okay. अगर हमारी नॉलेज अच्छी है, हमारी स्किल्स अच्छी है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं ना, हम वहां सब कुछ खराब कर देते हैं। और आपकी, आई मस्ट से दिस थिंग, बीच में एक तो मैंने आपको आई वाली चीज बताई थी कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, लेट सपोज हम्म, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, एक एक्टिव लिसनर वही होता है जो क्वेश्चन को पहले सुने समझे और फिर जवाब दे। ठीक है, तो okay. उसको समझना है कि मैंने इन जनरल पूछा था टीम प्लेयर क्या है, मैंने पूछा था कि यू एज ए टीम प्लेयर। ठीक है, उस रेफरेंस में आपने बताना है। ठीक है, दूसरी चीज, आप कॉन्फिडेंस को जब लूज करते हो ना, होता है आपके आंसर में वो चीज डगमगाने लग जाती है। तो उस चीज पे आपने रहना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है बस। यू आर गुड टू गो विद नॉलेज, यू आर गुड टू गो विद योर स्किल्स। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हुआ है? मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे आंसर्स जो है ना, मैंने आईओसीएल के प्रिपेयर किए थे। लाइक अभी मेरे शायद ऑन 9th द डेट वी आर शेड्यूल्ड फॉर द इंटरव्यू। सो मेरे पास अभी टाइम नहीं था एचपीसीएल के लिए अलग से मतलब प्रिपेयर करने का। सो दीज वी आर द आंसर्स दैट आई प्रिपेयर फॉर आईसीएल। अब मुझे वो लगता है कि वो क्या वो एचपीसीएल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, या हम्म। कुछ अलग करना है। तो दैट्स व्हाई सम लाइक डाउटफुल इज देयर कि क्या वो आंसर सही है या नहीं है। तो अभी मुझे थोड़ा मतलब वही टाइम है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आंसर। देखो मेरी बात सुनो, सब कुछ सही है, आपको बस अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है वहां पे। मैं बताती हूँ आंसर। जब तुम्हें पता है एचआर का एक एडवांटेज क्या होता है आर्यन, आईओसीएल की अभी तुमने मुझसे बात करी, मैं तुमसे अब एचपीसीएल की बात कर रही हूँ। हमें ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी चीजें डिफरेंट करनी पड़ती हैं। देखो IOCL इट्स ऑल्सो लाइक इंडियन ऑयल, HPCL इज ऑल्सो लाइक ऑयल बेस्ड रिफाइनरी लाइक कंपनी, पब्लिक सेक्टर। थोड़ा कॉमन चीजें होंगी, लेकिन अपने आप में हमने आपको पोर्ट्रे उस हिसाब से करना है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। एचआर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। अगर आप 5 स्नैप अपने अपने आईओसीएल में दिए ना, अगर आप और 7 स्नैप अपने एचपीसीएल में दोगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा एचपीसीएल के इंटरव्यू में जाने के लिए। ठीक है, अपने आप को अच्छा प्रिपेयर किया है, एचआर में आपके बारे में चीजें पूछी जाती है, सो यू आर गुड टू गो विद इट। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। डन। चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम।